अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 40th लेक्चर में हो रही है। दैट मीन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द कोर्स। इससे पहले कि वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, because today's lecture is the continuation of our previous lecture, so we'll just go back and then start few of the topics from the previous lecture and then continue with our today's lecture. Overall, we have started talking about the monetary policy. Okay, what is the role of the central bank and how the central bank can conduct the monetary policy. But basically, we were talking about the equation of exchange. In exchange equation, we simply said MV is equal to PY. M is the money, V is the velocity of money, and that is equal to P is the price level and Y is the real GDP. So we are trying to establish a relationship between four variables. And this relationship becomes more clear when we just take the exchange equation in terms of percentage change. So in this type of multiplicative argument on one side of the equation and the multiplicative argument on the other side of the equation, if we talk about the percentage change, we can simply say that percentage change in M plus percentage change in V is equal to percentage change in P plus percentage change in Y. So we are saying the rate of growth in money plus the rate of growth in velocity is equal to the rate of growth in prices, which is the inflation rate, plus the growth in the real GDP. Over a short period of time, we can assume that the velocity is stable, that the percentage change in V is equal to 0. It does not mean that velocity itself is 0. We are saying it is stable, but the rate of change is 0. Similarly, we can also say that change in Y, which is the real output, percentage change in Y, we can assume as 0 over a short period of time. Because real GDP को determine करने के लिए we need to look at the resources available, resources and the technology available. So during a short period of time, we can assume that percentage change in Y is also 0. Then we are left with two arguments. One is on the left hand side of the equation and the other is on the right hand side of the equation. And then we simply say percentage change in M is equal to percentage change in P. The rate of growth in money leads to the changes in the inflation rate. So from there we established a relationship between the money growth and inflation. And based on this, we said the policy makers, they can decide about the inflation. Because the objectives which are given to the central bank, the first and the foremost is to keep a stable and low inflation. And then we said how the policy makers can keep this inflation stable. What are the policy tools in the hands of the policy makers? So there we say, okay, the central bank has the ability to change the size of the balance sheet. The central bank can write check against itself. By selling and purchasing the government securities, the central bank has the authority to change the reserves of the other banks and therefore the size of the balance sheet. And through this activity, when the central bank changes the size of the balance sheet, we have seen through the use of the multiplier that it leads to change in money. So the changing the money or the growth rate of money basically is controlled, can be controlled by the central bank. So when the money growth changes, it may lead to the changes in inflation rate.
So we see a direct relationship between the money growth and the rate of inflation. And from there, this basically exchange equation is given by the Irving Fisher, and then the Friedman also talked about that inflation is a monetary phenomena and we can control it through managing certain variables. And that management we have already discussed, so we are just focusing now on the velocity. So what basically is the velocity of money? The velocity of money is the number of times one unit of a currency is used for transaction purposes. For individuals, we say basically number of value of the transaction is equal to the amount of money available times the number of times that has been used. If you are talking about the economy, the same thing applies to the inflation and this money growth relationship, where we say number of times the money is used for transaction is the velocity. Given a growth in the money supply or the stock of the money supply times the velocity is equal to the nominal GDP. So we also say, okay, one thing is by increasing the money growth, we can change the inflation. But if the money stock is held constant but the velocity increases, so the increase in the velocity will have the same effect on the inflation as of increase in the money growth. Because these are the two arguments which determine the inflation rate, assuming real GDP is held constant. And then this velocity basically is dependent on how much money people want to hold in their hands. कि लोग जो हैं वो अपने पास कितना मनी का स्टॉक जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो सकती है. So there we say कि velocity is dependent on the demand for money. And then we started talking about the demand for money, and we said we can make two broad categories of demand for money. The first category is the transaction demand for money, and the second category is the portfolio demand for money. So in transaction demand for money, we are focusing that the individuals, businesses, they hold money to undertake certain transactions. There we are focusing on the role of money as the means of payment, because we talk about three roles of the money or the functions of the money as a means of payment, unit of account, and a store of value. So here we are talking about the first role of money being used as a means of payment when we are talking about the transaction demand for money. And then we said how much demand for money people want to hold, how much money is dependent on various factors. And one of the factor was their nominal income. As the income level of individuals will increase, they would like to hold more money for transaction purposes. So there is a positive relationship. Similarly, we also talked about the velocity. We talked about the return on the other assets, substitutes. So all of these factors put together determines the transaction demand for money. And within the transaction demand, we also talked about the precautionary demand for money. That for unforeseen, unexpected events, if we want to hold certain amount of money, so that is also part of our transaction demand for money. And then we started talking about the portfolio demand for money. In the portfolio demand for money, we were focusing on the role of money as store of value. That people would like to hold money as one of the assets in their portfolio. And then, of course, what is the objective of a portfolio? The objective of a portfolio is to earn the maximum return with a given level of risk, or to minimize the risk for a given level of return.
So one of the assets is also money, and then there can be other assets as well. Stocks, bonds, real estates and the other substitutes. The portfolio demand for money depends on various factors. One of the factors, of course, is the wealth. As the wealth increases, the portfolio demand for money will also increase. You would like to hold more money for your portfolio. Then we talk about the return on the substitutes on stocks and the bonds. If the return on the substitute stocks and the bonds that decreases, then the demand for money will increase, because the money basically has an opportunity cost. And the opportunity cost in the sense that the money does not earn any interest. So the interest which the investor earn on the other asset is the opportunity cost. So if the return on the other assets decrease, then the opportunity cost for holding money decreases, and therefore the portfolio demand for money will increase. Similarly, we are talking about the riskiness. If the riskiness of the other assets increases, then the portfolio demand for money will increase, and of course the liquidity. If the liquidity of the other asset increases, then of course the demand for money will decrease, because the money is kept in a portfolio because of the liquidity of the money. When we talk about the money as an asset, so it has two characteristics. One is it earns zero interest, but its maturity period is also zero. It's a highly liquid, and of course net return in terms of the earnings or the return is zero. So that completed our portfolio demand for money. And after completing the portfolio demand for money, we started talking about targeting money growth in a low inflation environment. What does it mean? In the long run, we say we can talk about a relationship between inflation and money growth, but in the short run, if we hold velocity constant, growth rate in real output constant, then there is a direct relationship between money growth and inflation. So in order to use the money growth as a target to achieve the objective of stable and low inflation, there are certain prerequisites. One of the prerequisites is that there should be a strong link between the monetary base and quantity of money. Because previously, when we were talking about the central bank and the money creation process, there we said monetary base or the high-powered money provides us the basis on which further expansion or the growth in money takes place. So, how do we define the monetary base? We say the monetary base is currency plus the deposits. So, if we have a strong link between the monetary base and the quantity of money through that system, the system consisting of the central bank and the other commercial bank, and of course with the help of the multiplier, one unit increase in the monetary base will lead to a multiple increase in money. So, if the link is strong, then we need to establish now the link between the money growth and inflation. Money growth and the inflation, how they are related? Of course, they are directly related with the help of the exchange equation or the quantity theory of money. So, having established these relationships, we can use the money growth as a target to control the inflation in a low inflation environment. Because if we are talking about a high inflation environment, then only changing the velocity will not serve the purpose. But in a low inflation environment, we can use this monetary growth relationship with inflation, and then we can control the inflation with the help of changes in the money growth. And after that, we started talking about the long run. All of this discussion was related to the short run. And now we shifted our focus on the long run.
And in the long run perspective, we started talking about the inflation and output in the long run. So when we talk about the output in the long run, we started talking about the potential output. The potential output is that level of output if the economy utilizes all its available resources at a given level of technology. And the maximum output which that economy can achieve is the potential output. Maximum achievable output, in other words, we can say the maximum achievable output with a given level of resources and technology is the potential output. Now, the current output can be different from the potential output. Now, if our current output is equal to the potential output, then of course we are in the long run equilibrium. But the deviations do take place. We deviate from the potential output. And the deviations can take two different forms. In the first scenario, if our current output is higher than the potential output, then we have an expansionary gap. On the other hand, when our current output is lower than the potential output, then we have a contractionary gap. And then we started talking about the inflation in the long run. So when we talked about inflation in the long run and the output, which is the potential output in the long run, then we just started talking about money growth, inflation and aggregate demand. So here we are trying to link the aggregate demand to a monetary phenomena. And that monetary phenomena is that we are talking about the equation of exchange, or we are talking about the quantity theory of money. Now the quantity theory of money is where we say MV is equal to PY. So we can also talk about the aggregate demand in the perspective of the quantity theory of money. We can simply say YAD is equal to MV over P. So here we are simply rearranging the equation of exchange and we say YAD is the aggregate demand, M is the quantity of money, V is the velocity of money and P is the price level. Now from this expression it is clear that an increase in the price level reduces the purchasing power of money, which means less purchases are made, pushing down the aggregate demand. So what we are trying to do is, we are trying to use the exchange equation or the quantity theory of money and trying to build a relationship between money growth and the aggregate demand. And of course, that is through the change, or the relationship is established through the price level or the inflation rate. So if the inflation rate goes up and if the money growth remains the same or the growth in inflation is higher than the growth in money, then what happens? The purchasing power of money will decrease. So the purchasing power of the money is the real power on the basis of which household, businesses and the government even they go for their expenditures. And the aggregate demand, आगे जाके हम देखेंगे कि we talk about the aggregate demand having four components. And उन four components में एक component है हमारा consumption का, which comes from the consumer. दूसरा है investment का, which comes from the producer. तीसरा is the government spending and finally net export. और ये सारे के सारे जो हैं components, they are depending on the purchasing power of money. So if the purchasing power will increase, people in whatever segment they relate to or they belong to, they will demand more. So the aggregate demand will increase. And same thing we can express in the form of this equation here. We say that if inflation increases, money growth unchanged or growth in money is less than the growth in inflation, then our M over P, which is the purchasing power of money, will decrease. And if we assume velocity remains unchanged, that will lead towards the aggregate demand as decreasing. So aggregate demand YAD will
decline with the increase in inflation. लेकिन इसमें जो है हमने दो assumptions लगाई हैं. Number one, कि money growth जो है either it is stable or no change, or the change is less than the increase in inflation. And secondly, we are talking about कि velocity जो है that remains unchanged. Having these two conditions met, we see that increase in inflation will lead towards a decrease in aggregate demand. So from here we can draw a relationship between inflation and aggregate demand. And that aggregate demand relationship is a negative relationship. So to shift the focus to inflation, we need to look at the changes in the price level. Suppose that inflation exceeds the money growth with velocity held constant, real money balances will fall and so will the aggregate demand. So here we have established a relationship between inflation and the aggregate demand. But that relationship has been established through a change in inflation rate. But of course we have made certain simplified assumptions in which either the money growth remains unchanged or the increase in money or the growth in money is less than the increase in inflation. That will lead towards a decrease in the purchasing power of money. M over P basically is the purchasing power of money. And then we assume the velocity remaining unchanged. Now, if velocity also remains unchanged, then the result will be a decrease in aggregate demand. जब लोगों की purchasing power कम हो जाएगी, तो aggregate demand जो है वो भी कम हो जाएगी. They will be spending less. Their expenditure level will go down, and as a result, aggregate demand will go down. Now, this relationship we have shown with the help of a graph. On this graph, we have basically inflation and aggregate demand showing a negative relationship. So, what we have here is at higher levels of inflation, real money balances fall, resulting in a lower level of aggregate demand. So, we see an inverse relationship between inflation taken on the y-axis and the output level taken on the x-axis. So, aggregate demand is a downward sloping relationship which says if inflation increases, then the output will decline and vice versa. And how we can justify that? The same arguments जो हमने पहले दिए हैं कि because real money balances fall at higher level of inflation, resulting in a lower level of aggregate demand, the aggregate demand curve is downward sloping. Later on, we'll see that there is another reason for a downward sloping aggregate demand, and that is the interest rate. अभी हम सिर्फ inflation और इस relationship को negatively sloped aggregate demand की शक्ल में देख रहे थे. So, changes in the interest rate also provide a mechanism for aggregate demand to slope down. So, inflation on the one hand and the interest rate on the other hand both contribute towards a downward sloping aggregate demand curve. Now, we are going to talk about the monetary policy and the real interest rate. And then we are back to the monetary policy, but we are trying to relate it to the real interest rate. If we look at the tools in the hands of the central bank, they are open market operation, federal funds rate, and the discount rate. And most of the time, we said that the policy makers, they focus on the short-term interest rate. So, their policy target mostly is the short-term interest rate. But how do they influence the short-term interest rate? Then there are so many mechanisms here. So, we are going back to the monetary policy, but now we are translating the nominal interest rate to the real interest rate. इससे पहले भी हमने बात की थी कि हमारे पास एक रिलेशनशिप है जिसमें हम कहते हैं nominal interest rate is equal to the real interest rate plus the expected rate of inflation. And if we look at the aggregate demand perspective, so we need to focus on the real interest rate, because this is the interest rate at which individuals, they will make their spending decision, investing and spending decision. So here central bankers control short-term nominal interest rate by controlling the market for reserve. But the economic decisions of household and firms
depend on the real interest rate. अभी जैसे हमने पहले भी बात की थी पिछले 3-4 लेक्चर पहले कि जब हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि सेंट्रल बैंक जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू चेंज करता है रिजर्व्स ऑफ द बैंक. अगर जो है वो रिजर्व्स बैंक के बढ़ाना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू परचेज द सिक्योरिटीज, और रिजर्व्स को अगर कम करना चाहते हैं दे आर गोइंग टू सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. और रिजर्व्स को कम या ज्यादा करने के साथ सेंट्रल बैंक का फोकस जो है दैट इज टू कंट्रोल द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अगेन इन द नॉमिनल पर्सपेक्टिव. लेकिन जब हम इंडिविजुअल्स के डिसीजंस को देखते हैं एग्रीगेट डिमांड में, जैसे हमने पहले कहा कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग and the net exports. Now the first two especially when we are talking about the consumption and the investment, individuals they make their consumption and investment decisions they also come from the businesses. तो ये सब लोग जो हैं whether we are talking about the consumers or whether we are talking about the producers, their focus is on the real interest rate. In what sense? Because the real interest rate is the rate which is the real earning to the consumers. अब हमारी जो nominal income, total income होती है, we divide it normally into 2 components. उसका कुछ portion हम consume कर देते हैं और कुछ portion जो है हम उसका save कर देते हैं. अब अगर interest rate या real earning on the savings जो है वो बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे? We are going to save more and we are going to consume less. तो रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के साथ कंजम्पशन कम हो जाएगी. रियल इंटरेस्ट रेट के कम होने से कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रियल इंटरेस्ट रेट जो है दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन. सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, प्रोड्यूसर्स के लिए ये डिसीजन लेना कि किसी प्रोजेक्ट को वो अंडरटेक करें या ना करें, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रियल रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अब अगर हमारा रियल रिटर्न जो है, इन अदर वर्ड्स रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, इन अदर वर्ड्स वो जो रियल इंटरेस्ट रेट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. अब जो इन्वेस्टर है उसने एक तरफ तो रियल रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करना है कि इससे बेनिफिट कितना होना है, दूसरी तरफ उसने कंपेयर करना है इसको विद द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और द रियल इंटरेस्ट रेट. तो अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, रियल रिटर्न रिमेनिंग द सेम, देन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन. सो अगेन वी सी अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट्स. सो इंडिविजुअल्स जो है, वेदर द कंज्यूमर्स और द प्रोड्यूसर्स, व्हेन दे मेक देयर डिसीजन they focus on the real interest rate. So what we see from here is a negative relationship between the real interest rate and the components of the aggregate demand. In the short run, because inflation is slow to respond, when monetary policy makers change the nominal interest rate, they change the real interest rate. अभी हमने जैसे पहले बात की थी कि हमारे पास relationship है, nominal interest rate is equal to real interest rate plus expected rate of inflation. And now we are saying कि in the short run हमारी inflation जो है, the third component here, is slow to respond to changes in the nominal interest rate. So what we are left with is कि जब हमारे policy makers short term interest rate को change करते हैं तो automatically वो real interest rate को भी influence कर रहे होते हैं. और यही रियल इंटरेस्ट रेट इज द बेसिस फॉर द डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. सो द रियल इंटरेस्ट रेट देन इज द लीवर थ्रू विच मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लुएंस द रियल इकोनॉमी. इन चेंजिंग रियल इंटरेस्ट रेट्स दे इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड. और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि लॉन्ग रन में हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. जब हम आउटपुट इन द लॉन्ग रन की बात कर रहे थे तो देयर वी आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप
कि लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर होती हैं. करंट आउटपुट पोटेंशियल के बराबर एंड देन ऑफ कोर्स दैट विल बी इक्वल टू द एग्रीगेट डिमांड. अब हम डिटेल में देखना चाह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड का रियल इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशनशिप. तो फॉर्मली अभी तक हम बात करते चले आ रहे थे कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द नेट एक्सपोर्ट. अब हम उसको फॉर्मली अगर लिखना चाहें तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि एग्रीगेट डिमांड इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स: कंजम्पशन, investment, government purchases, net export. So aggregate demand YAD is equal to consumption C. Now consumption basically comes from the consumers. It includes all of our consumptions during a particular period of time. आपकी consumption on the food, clothing or anything that comes under the consumption. Then we are talking about the investment. Investment basically comes from the businesses. लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ड्यूरेबल के ऊपर कंज्यूमर स्पेंड करते हैं या हाउसिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. चेंज इन इन्वेंट्री, बिजनेस की इन्वेंट्री जो चेंज होती है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन आई. प्लस जी, जी इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, hospitals, education, so that is included in G. Then comes the net exports. Net exports is our exports minus the imports. So it is helpful to think of aggregate demand as having 2 parts. One that is sensitive to real interest rate changes and one that is not. अब यहाँ पे क्योंकि हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं रियल इंटरेस्ट रेट का एग्रीगेट डिमांड के लिए, तो हमें इन कंपोनेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा इन 2 कैटेगरीज. एक कैटेगरी होगी जो कि सेंसिटिव है टू द चेंजेस इन द रियल इंटरेस्ट रेट और दूसरी कैटेगरी होगी जो कि सेंसिटिव नहीं है टू चेंजेस इन द रियल इंटरेस्ट रेट. अब कंजम्पशन ऑफ कोर्स इज सेंसिटिव, जैसे कि हमने पहले कहा है, टू द चेंजेस इन द रियल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो हम सेव ज्यादा करते हैं और कंज्यूम जो है वो लेस करते हैं. इन्वेस्टमेंट में भी हम देखें, इट इज सेंसिटिव कि अगर रियल इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अगर वो बढ़ जाती है तो लेस इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वी कैन से गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, दैट इज नॉट sensitive to the real interest rate because they have to undertake those projects. And then come the net exports. Of course, the net exports is also sensitive to the changes in the real interest rate. So here investment is the most important of the component of aggregate demand that is sensitive to changes in the real interest rate. An investment can be profitable only if its internal rate of return exceeds the cost of borrowing. अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द रियल इंटरेस्ट रेट जो कि हमने पे करनी है. तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट उस वक्त हम अंडरटेक करेंगे जब हमारा रियल रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. कंजम्पशंस, decisions and net exports also respond to the real interest rate. Consumption decisions often rely on borrowing. And the alternative to consumption is saving. Higher rate means more saving. Now here we can talk about 2 categories of the consumption. कि अगर हमारी consumption on the durable products है, तो we may be going for borrowing. अब अगर cost of borrowing which is the real interest rate वो बढ़ जाती है, तो हमारी consumption on the durable कम हो जाएगी. On the other hand, अगर हमारे cost of borrowing तो एक तरफ, दूसरी तरफ है कि हमारी अपनी इनकम में से अगर रिटर्न ऑन द सेविंग बढ़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा, हमारी सेविंग ज्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी. इन एनी वे both of these components, whether these are the durable or the non-durable goods, both are sensitive to the changes in the real interest rate. As for the net exports, when the real interest rate in a country rises, her financial assets become attractive to foreigners, causing local currency to appreciate.
which in turn means more imports and fewer exports, lower net exports. What does it mean? कि हमारे पास अगर real rate of return for country A increases, what happens? We have the free mobility of capital के दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो कंट्री ए में इन्वेस्ट कर सकते हैं. So that will be an attraction to invest in country A. क्योंकि country A पे investment का rate of return is higher. So more and more people from the other countries, they would like to invest in country A. So in order to invest in country A, they need the currency of country A. Now when they need the currency of country A, they're going to the foreign exchange market. So demand for the currency A will go up, which means the currency of the country A will appreciate. Appreciate का मतलब ये है कि उसकी प्राइस बढ़ गई. उस करेंसी की प्राइस बढ़ने की वजह से उस कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनकी भी प्राइस बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी. जब उनकी प्राइस बढ़ गई तो एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव. दूसरी तरफ कंट्री ए जो इंपोर्ट्स करता है फ्रॉम द अदर कंट्रीज, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ने की वजह से इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी या कंट्री ए की करेंसी की शक्ल में जो है इंपोर्ट्स जो है वो सस्ती हो गई. ओवरऑल क्या होगा कि हमारे पास जो है एक्सपोर्ट्स कम हो गई और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी. और नेट एक्सपोर्ट्स क्या है हमारे पास? नेट एक्सपोर्ट्स आर एक्सपोर्ट्स माइनस द इंपोर्ट्स. तो एक तरफ तो हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, दूसरी तरफ इंपोर्ट्स बढ़ रही हो रही हैं. तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या है कि नेट एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू गो डाउन एंड वी सी अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द नेट एक्सपोर्ट्स. एंड फाइनली, while changes in the real interest rate may have an impact on the government's budget by raising the cost of borrowing, the effect is likely to be small and ignorable. कि अभी हमने 3 कंपोनेंट्स की बात की है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स. एंड वी हैव सेड कि they are sensitive to the changes in the real interest rate. The fourth component, government spending. तो गवर्नमेंट बजट जो है डेफिनेटली उसमें बोरोइंग भी होती है. And that borrowing can be sensitive to the real interest rate, but ये इतनी कम sensitivity होगी क्योंकि they have to undertake those projects कि that can be ignored. And we can simply say कि government spending को हम non-interest sensitive expenditures में या components of the aggregate demand में डाल कर देते हैं. So thus considering consumption, investment and net exports, an increase in the real interest rate reduces aggregate demand. The effect on the fourth component, government spending, is small enough to be ignored. तो अभी हमने बात की कि 4 कंपोनेंट है हमारे एग्रीगेट डिमांड के, जिसमें से 3 कंपोनेंट्स इंटरेस्ट सेंसिटिव है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट एक्सपोर्ट, और चौथे कंपोनेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम नॉन सेंसिटिव की कैटेगरी में डाल सकते हैं. So let's summarize whatever we have discussed so far. अब वो समरी जो है हमने वो इस टेबल में रिप्रेजेंट किया है या प्रेजेंट की है. So impact of rise in the real interest rate on components of aggregate demand. The first column is about the component of the aggregate demand. The second column is effect of a rise in the real interest rate, and the last column is impact on component of aggregate demand. The first is consumption or C. An increase in the real interest rate, the effect will be that the reward to saving will increase and people would like to save more, and as a result क्या होगा? Consumption is going to go down. Impact on the component of aggregate demand is consumption will fall. Secondly, investment or I, increase in the real interest rate will result in cost of financing going up. As a result, investment is going to go down. Net exports, increase in the real interest rate, the demand for domestic asset rises, causing a currency appreciation, raising the price of exports and decreasing the cost of imports. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये सारा मैकेनिज्म जो है हमने समराइज कर दिया है इस टेबल के अंदर.
कि रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाएंगी करेंसी अप्रिसिएशन की वजह से, इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी और हमारे पास एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स जो कि नेट एक्सपोर्ट्स हैं, इट इज गोइंग टू गो डाउन. सो एग्रीगेट डिमांड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड थ्रू एक्सपोर्ट फॉल्स, इंपोर्ट राइज एंड नेट एक्सपोर्ट्स विल फॉल. And finally, aggregate demand YD. In YD, what we have here, C, I and net exports are all going to go down and aggregate demand overall will experience a decrease. Aggregate demand falls. तो ये तो था हमारा relationship between the real interest rate and the aggregate demand. Now we are going to talk about the long run real interest rate. जैसे हमने आउटपुट के बारे में बात की थी कि लॉन्ग रन की आउटपुट में हमने ये कहा था कि हमारी जो आउटपुट है दैट इज द पोटेंशियल आउटपुट, और उसमें हमने ये कहा था कि हमारी जो पोटेंशियल आउटपुट है इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट जिसमें हम अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो मैक्सिमम आउटपुट लेंगे, दैट इज द पोटेंशियल आउटपुट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट. There must be some level of the real interest rate at which aggregate demand equals the potential output. This is the long run real interest rate. तो हमारे पास अब पोटेंशियल आउटपुट से रिलेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन. उससे पहले हमने एस्टैब्लिश किया रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द एग्रीगेट डिमांड. एक ऐसा रियल इंटरेस्ट रेट जो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड को बराबर कर दे, इक्वल कर दे टू द पोटेंशियल आउटपुट, दैट इज आवर लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट. वंस अगेन, हमारा लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट विल बी दैट इंटरेस्ट रेट विच विल इक्वेट द एग्रीगेट डिमांड टू द पोटेंशियल आउटपुट. उससे पहले हम देख रहे थे कि हमारा रियल इंटरेस्ट रेट और एग्रीगेट डिमांड जो है इनवर्सली रिलेटेड है. रियल इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है. अब ऐसा रियल इंटरेस्ट रेट कि जो चेंजिंग एग्रीगेट डिमांड को बराबर कर दे पोटेंशियल आउटपुट से, दैट बेसिकली इज द लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट. सो द लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट इक्वेट्स एग्रीगेट डिमांड विद पोटेंशियल आउटपुट. द रेट विल चेंज if a component of aggregate demand that is not sensitive to the real interest rate goes up or down, or if the potential output changes. अब हम ये कह रहे हैं कि ये रेट जो है ये किस तरह चेंज होगा. There are two sources. The first source is कि पहले हमने, आपको याद होगा कि कैटेगराइज किए थे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को. एक हमने कहे थे इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट, दूसरे हमने कहे थे नॉन सेंसिटिव कंपोनेंट. सेंसिटिव कंपोनेंट में हमने कहा था कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स एंड द नेट एक्सपोर्ट, और नॉन सेंसिटिव में हमने फॉर एग्जांपल कहा था गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अब हमारा ये जो लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट है, व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये चेंज होगा अगर एनी ऑफ द कंपोनेंट व्हिच इज नॉन सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द रियल इंटरेस्ट रेट. अब वो कंपोनेंट किसका है? एग्रीगेट डिमांड का. कि एग्रीगेट डिमांड का वो कंपोनेंट जो नॉन इंटरेस्ट सेंसिटिव है या वो चेंज हो जाए, और सेकेंडली क्या है कि हमारा पोटेंशियल आउटपुट का लेवल जो है वो चेंज हो जाए. तो इन दोनों के चेंज होने से हमारा लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट जो है दैट विल चेंज. सो लेट्स टेक वन एट ए टाइम. सो फॉर एग्जांपल, an increase in the government purchases, all else held constant, will raise aggregate demand at every level of the real interest rate. अब हमने ये कहा कि 4 कंपोनेंट है, 3 इंटरेस्ट सेंसिटिव है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है दैट इज नॉट इंटरेस्ट सेंसिटिव. अब अगर बाकी कंपोनेंट्स में कोई चेंज नहीं है, ऑल हेल्ड कांस्टेंट, और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो क्या होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने के साथ क्या होगा कि दैट विल रेज द एग्रीगेट डिमांड एट एवरी लेवल ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट, कि हमारी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा एट एवरी लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट. अब इसमें क्या होगा? टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड मस्ट फॉल, एंड फॉर दैट टू हैपन
the long run real interest rate must rise. तो अब क्या है कि नॉन सेंसिटिव इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट बढ़ गया. अब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए व्हाट बेसिकली इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज वेयर आर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द पोटेंशियल आउटपुट. अब एक कंपोनेंट में चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड चेंज हो गई है. अभी एट एवरी गिवन लेवल ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट. अब होना क्या चाहिए इन ऑर्डर टू कम बैक इनटू इक्विलिब्रियम? हमारे जो इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट है उनमें से एटलीस्ट एक को चेंज होना चाहिए सो दैट कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इज अगेन इक्वल टू द पोटेंशियल आउटपुट. और उसके लिए क्या है कि उसको चेंज होने के लिए वो अगर बढ़ गया है नॉन सेंसिटिव वाला कंपोनेंट, तो सेंसिटिव वाले कंपोनेंट को कम करना है. और वो कम किस वक्त होगा? जब हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. So one of the interest sensitive component has to go down in order to come back into equilibrium. और वो interest sensitive component उस वक्त कम होगा जब real interest rate जो है वो बढ़ जाएगा. The same would be true for increase in other components of aggregate demand that are not interest sensitive. ये तो हमने एक गवर्नमेंट फंडिंग की बात कर ली है. अगर कोई भी और नॉन इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट चेंज होगा तो हमारा मैकेनिज्म यही होगा. और सेकेंडली हमने ये कहा था कि पोटेंशियल आउटपुट के चेंज होने से भी हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होगा. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. अ चेंज इन द पोटेंशियल आउटपुट हैज एन इनवर्स इफेक्ट ऑन द लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट. हाउ? व्हेन पोटेंशियल आउटपुट राइजेस, एग्रीगेट डिमांड मस्ट राइज विद इट, व्हिच रिक्वायर्स अ डिक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट. क्योंकि हमने बात की थी, बाय डेफिनेशन हमने ये कहा था कि लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट ऐसा इंटरेस्ट रेट है जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाएगी पोटेंशियल आउटपुट के. अब अगर हमारी पोटेंशियल आउटपुट ही बढ़ जाती है तो हमें क्या चाहिए? वी नीड टू कम बैक इनटू इक्विलिब्रियम. उसके लिए हमारी एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ना चाहिए. अब एग्रीगेट डिमांड किस वक्त बढ़ेगी? जब इंटरेस्ट रेट लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट कम होगा और हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी थ्रू इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट्स. सो व्हाट वी सी हियर इज कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल आउटपुट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट. कि अगर हमारी पोटेंशियल आउटपुट बढ़ती है तो लॉन्ग रन रियल इंटरेस्ट रेट विल फॉल एंड वाइस वर्सा. और दूसरा था नॉन इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट के बढ़ने के साथ हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है. अब इसी सारे कुछ को हम सम अप करेंगे बाय लुकिंग एट द रिलेशनशिप ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द रिएक्शन कर्व. एंड सिंस द टाइम डज नॉट परमिट अस टू बेसिकली गो फॉर द इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ द रिएक्शन कर्व, so in today's lecture we will only introduce the reaction curve, and then inshallah in the next lecture we are going to complete our discussion. So let's see, we have inflation, the real interest rate and the monetary policy reaction curve. कि अभी तक हम जो बात करते चले आ रहे थे, इन्फ्लेशन के बारे में बात की, मनी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को देखा शॉर्ट रन के अंदर, और वो भी हमने ये कहा कि इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स. अब फिर उसके साथ हमने रियल इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन की एंड रिलेटेड टू दैट इज द रिएक्शन कर्व. अब रिएक्शन कर्व आगे जाके हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन को और रियल इंटरेस्ट रेट को रिलेट करती है. बट टू बिगिन विद, पॉलिसी मेकर्स सेट देयर शॉर्ट रन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टारगेट्स इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक कंडीशंस इन जनरल एंड इन्फ्लेशन इन पर्टिकुलर. कि शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट रन में जब भी मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनका टारगेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हुए इन्फ्लेशन को चेंज करते हैं, और ये सारी डिस्कशन हम अपने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हुए हैं. बट द न्यू थिंग हियर इज कि व्हेन करंट इन्फ्लेशन इज हाई और करंट आउटपुट इज रनिंग अबव पोटेंशियल आउटपुट, central bankers will raise nominal interest rate.
जैसे हमने ये कहा था कि अगर हमारी करंट आउटपुट इज हायर देन द पोटेंशियल आउटपुट, वी हैव एन एक्सपेंशनरी गैप। तो एक्सपेंशनरी गैप के सूरत हाल में they are going to increase the short term interest rate. When current inflation is low or current output is well below potential, they will lower the interest rate. कि अगर हमारे पास contractionary gap है, हमारी current output is less than the potential output, and of course the inflation will be low, then the policy makers are going to take the reverse action by changing the interest rates. So while they state their policies in terms of nominal rate, they do so knowing that changes in the nominal interest rate will eventually translate into changes in the real interest rate. And it is those changes that influence the economic decision of firm and household. हमने अभी ये कहा कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म में पॉलिसी मेकर्स के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, that is the short term interest rate. They try to control inflation by manipulating the short term interest rate. But when they are changing the short term interest rate, their target is the short term interest rate, but they know the change in the short term interest rate will lead to a change in the real interest rate automatically, because we do have a relationship where we say nominal interest rate is equal to real interest rate plus the expected rate of inflation. और जब हमारे रियल इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो फिर ही हमारे हाउस होल्ड, बिजनेसेस एंड दूसरों के डिसीजंस जो हैं वो चेंज होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड द नेट एक्सपोर्ट्स. Experts agree that any coherent monetary policy can be written as an inflation target plus a response to supply shock. कि जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो we of course talk about the stable and low inflation rate, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सप्लाई साइड शॉक भी रिलेटेड है, which we are going to discuss in the next lecture. So since the time does not permit us, so we cannot go further in our discussion on the reaction curve, but we have built up the basis, the background to talk about the reaction curve. So inshallah अगले lecture में we'll talk about the reaction curve. So आज के लिए डॉक्टर तालत को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.